हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेसिडेंट इवल 4 चेनसॉ डेमो जो है उसको फुल स्क्रीन में कैसे लाएं विंडो मोड से। ये बहुत इजी फिक्स है। मेरे को नहीं पता ये लोग पहले से उसको इनेबल करके क्यों नहीं देते, लेकिन बहुत आसानी से फिक्स हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, गेम कंटिन्यू करना है उसके स्टार्ट होते तक। गेम स्टार्ट होगा उसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे हम लोग को सारा ओके ओके करना है। और मैं पहले ही अपना इसके पहले बहुत सारे सेटिंग करने के लिए बोलता है, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट गेम करना, ऑप्शन में जाना। ऑप्शन में जाने के बाद आप जाना ग्राफिक में। ग्राफिक में जाने के बाद यहाँ पे ये आपका होगा विंडो। ये जैसा ऐसा होगा आपका गेम, तो इसको विंडो से चेंज करके फुल स्क्रीन में कर लेना। बॉर्डरलेस विंडो कर सकते हो या फिर फुल स्क्रीन कर सकते हो। फुल स्क्रीन करना और आपका गेम पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। थैंक यू। Hello, in this video I'll tell you how to fix the window issue and how to make it full screen in Resident Evil 4 Chainsaw demo. I don't know why they haven't made it by default, but it is an easy fix and you can do it. First of all, you just have to open your game and you have to perform some settings and like brightness and something, and you have to also agree to terms and condition. After that your game will start, and after the starting of the game you have to click on start game and then go to options, and in the option section you have to go to graphic. In the graphic you will see display mode. Mine is in full screen as you can see, but it will be windows. If you are facing the window issue, you just have to switch it to full screen, and that is it. Bye.